अस्सलाम वालेकुम। जब आपने ये देखा ना कि आपके पास इस कंट्री के अंदर ये देखा ना स्पेन में 2 रिव्यूज शो हो रहे हैं, हर जगह पे रिव्यूज हैं। मैं कहूँ यार ये कहाँ से रिव्यूज आ गए। मैं रिव्यूज पे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैं नीचे जाता हूँ रिव्यूज में, यहाँ पे रिव्यूज है, मैंने क्लिक की और मैं किसी एक रिव्यूज पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी एक पे करूँगा वो मुझे इस पेज पे ले आएगा रिव्यूज वाले में। तो ये मैंने 3 स्टार पे क्लिक किया था ना, यहाँ पे मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा 3 का, मेरे पास सारे रिव्यूज शो हो जाएंगे हर कंट्रीज के। तो मैंने कहा था ये रिव्यू आया, रिव्यूज जर्मनी में आया है ये रिव्यू। तो मुझे पता चला ये जो 1 स्टार जर्मनी में आया, मैं यहीं से ही सीधा डी में चला जाऊंगा। तो मैं अब यहाँ पे इंग्लिश करूंगा कि मसला क्या है। यहाँ पे मसला है कि डजंट मेजर एक्यूरेटली, टोटल फ्लॉप, ठीक है ना। अब ये तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा जर्मनी में, जर्मनी में आ गया, जर्मनी के ऑर्डर्स में जाऊंगा, मैं जर्मनी में ऑर्डर्स में आ गया और मैं चल इसी PH मीटर के ऑर्डर को ले लेता हूँ जिसके ऊपर मुझे ये जर्मनी, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ये मुझे इस पे रिव्यू आया है, ठीक है ना। ये मैंने इसका एसएम कॉपी किया, मैंने डाला कि ये 10 गए हैं, 10 गया ना मेरे पास ये पिछले 7 दिनों में। तभी देखता हूँ ये है रिव्यू अंदर। इसका नाम है जी डेनिस हैफमैन। कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V, नहीं आया। मैं करता हूँ यहाँ पे 14 दिन, कंट्रोल F, कंट्रोल V। अच्छा मेरे पास ये पिछले 14 दिन 21 गया, मैं यहाँ पे 30 दिन कर लेता हूँ। जब सारे मेरे पर ऑर्डर आ गए, NL का आ गया, फ्रांस का आ गया, D का आ गया, सारे मेरे पास उसके आ गए। अब ये D क्या ना, तो ये तो नहीं मिला मुझे, ये किधर गया। ये जो बंदा है ना डेनिस, अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, ये उसकी प्रोफाइल है, डेनिस हॉफमैन। हॉफमैन को जाके मैं करूं, नहीं आया। अच्छा डेनिस को अगर करूं मैं, हाँ ये डेनिस आ गया है। तो अब मेरे पास ये DSS डेनिस हॉफमैन उसने, बट डेनिस मैंने चेक करना है, डेनिस आया है। इसने खरीदा है जी 1 मार्च को, 1 मार्च को उसने खरीदा है और रिव्यू उसने छोड़ा है मुझे 7 मार्च को। रिव्यू उसने छोड़ा है 7 मार्च को, मतलब उसने 1 को खरीदा और 6 दिन बाद उसने चेक करके रिव्यू छोड़ दिया कि गलत, ये टोटल फ्लॉप है, ठीक है ना। अब अच्छा अब ये बंदा तो मिल गया है, अब मैं इसके ऑर्डर्स को आगे करूंगा। ये मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा इसने मुझे कोई फीडबैक नहीं छोड़ी, डेनिस हैज नॉट लेफ्ट जो फीडबैक उसने मुझे नहीं छोड़ी। उसने एक बाई किया है, ये मेरे पास उसका आ गया, ऑर्डर निकल आया। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट बायर पे जाऊंगा, अगर कॉन्टेक्ट बायर मुझे अगले पेज में ले गया है। वो कहता है कि कंफर्म ऑर्डर डिटेल्स है, सेंड नेसेसरी लीगल डिक्लेरेशन, अदर्स आस्क कस्टमर फॉर और notify of a problem with the shipping your order, use this message to notify your customer there is a problem with your order, send invoice है, coordinate डाल। अच्छा मैं अगर इसमें करता हूँ अदर्स में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अब ये मैसेज मैं लिखता हूँ कि type your message in the box below, we will forward it to your buyer, please do not include HTML links, your message refer to an item, Amazon website include the product name और SN, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये उसने खुद बनाया, हाय डेनिस, सेलर नीडम हैज अ मैसेज फॉर यू, ठीक है ना। ये ऐसे आएगा। तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखना है, वो पहले ये तो लिखो हाय डेनिस, मैं लिखूंगा मैनी थैंक्स फॉर योर ऑर्डर विद us, we are really sorry that you were not satisfied from our product, but there is no need to worry as
we are here to assist you in this matter because of customer is our. If you want, we can send you a new if you if you want, we can send you if you want, we can send a new same item to you, otherwise refund. इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, as electronic items are reliable. लिखना है, ये कैसे लिखेंगे हम? reliable, unreliable. As electronic items are unreliable, we request our customers to contact us first to issue before leaving us NETA रिव्यू. ठीक है ना? बाकी हमने क्या लिखा है? रिव्यू. इफ यू वांट वी कैन. अगर इसको मैं सारे को लेके आ जाऊं, कट करके यहाँ पे ले आऊं मैं, यहाँ पे we are really sorry that you are not satisfied from our product, but there is no need to worry as we are here to assist you in this matter. Here to assist you in this matter because customer understand. इसको भी अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, 100% customer satisfaction is the first priority. As electronic items are unreliable, we request our customers to contact us first to solve the issue before leaving us negative feedback or review. If you want, we can send a new same item to you, otherwise refund. Otherwise we can refund. Otherwise we can refund you as well. Get back to us, and can you please get back to us to solve the issue. अभी हमने उनको जो है ना ये नहीं कहा कि भाई प्लीज ये रिव्यू आप माइनस कर दे. पहले तो उस कस्टमर को हम एंगेज कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से हमारी बात माने. ठीक है ना? इसलिए मैंने ये बनाया. इसको मैंने कंट्रोल A करके और इसको मैंने किया जर्मन में, क्योंकि ये जर्मन का कस्टमर है. ये जर्मन में हो गया. जर्मन में करके मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और मैं चला गया यहाँ पे. देखें अमेज़न कैसे टेम्पलेट बना रहा है. हाय सेलर नीडम, और फिर उसके बाद ये हमारा मैसेज हमने किया है. You can send a message to the seller Needham by replying to this email. You can send a message to the seller. अब ये कस्टमर को ये लगेगा भाई अगर आप कस्टमर को ये मैं बैठा हूँ जर्मनी में, यू नो,
तो ये जर्मनी में मैंने कॉन्टैक्ट किया, देखते हैं। अगर मैंने इसको सेंड कर दिया